Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a bat emits ultrasonic sound of frequency 100 kHz in air. If this sound meets a water surface, the wavelengths of the reflected and transmitted sound are speed of sound in air is equal to 340 meter per second and in water is equal to 1500 meter per second. तो क्वेश्चन में हमको दिया गया कि हमारे पास एक मूविंग बैट है जो साउंड एक अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करता है जिसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमको प्रोवाइड किया है जिसके इक्वल टू 100 किलोहर्ट्ज। अब हमें कहा गया कि ये जो साउंड वेव है जो हमारा बैट एमिट कर रहा है इट इट रीचेस अ वाटर सरफेस, इट मीट्स अ वाटर सरफेस। तो जैसे ही ये साउंड वेव हमारे वाटर सरफेस को मीट करेगा, इट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर एंड देन मीट्स द वाटर सरफेस, देन ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ दैट साउंड वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड आउट इनटू द एयर एंड गेट ट्रांसमिटेड इनसाइड द वाटर। तो हमको दोनों ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव का स्पीड हमको का वेवलेंथ हमको यहाँ पर निकालने के लिए पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है the frequency of the emitted ultrasonic sound wave. So we have frequency nu that is equal to 100 kilohertz, जिसको हम लिख सकते हैं just to be equal to 10 to the power 5 hertz. तो ये है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी। हमें कहा गया कि the speed of sound in air, that is v in air, is equal to 340 meter per second, और speed of sound in water surface that is equal to 1500 मीटर पर सेकेंड। और हमें पूछा गया व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड साउंड। सो ऑब्वियसली अगर ये हमारा बैट है, दिस इज द बैट एंड इट इज emitting a ultrasonic sound wave and this is the water surface, then after hitting the water surface a part of this will be reflected back into the air and a part of this would be transmitted inside the water. Okay, so the part of the sound wave which will be reflected back into the air, that will be the reflected wave, and the wavelength of the reflected wave, so we can write out the wavelength of the reflected sound wave will be what? It would be simply equal to the speed of sound in air, that is v air, divided by the frequency nu, right? So speed of sound in air is given to be equal to 340 meters per second, and we have the frequency of the ultrasonic sound wave to be equal to 10 to the power 5 hertz. So this would be in wavelength, so this is in meters, so we have this to be equal to 34 into 10 to the power minus 4 meter, or this is equal to 3.4 millimeter. Similarly, the part of the sound wave which will be transmitted inside the water surface, उसका हमारा जो wavelength होगा वो कितना होगा? ये हो जाएगा simply lambda transmitted, एंड ये कितना होगा? क्योंकि हमारा जो साउंड वेव है अभी वो वाटर सरफेस के अंदर ट्रैवल कर रहा है, सो इट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन द वाटर सरफेस डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। सो ये हो जाएगा 1500 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 to the power 5 hertz, and this is equal to 15 into 10 to the power minus 3 meter, or 15 millimeter. तो हमने देखा कि द स्पीड ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द reflected sound wave is equal to 3.4 millimeter, and the wavelength of the transmitted sound wave that is equal to 15 millimeter. तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, and that is option C. So option C is the correct option. I hope you understood the concept well. Best of luck.